Yes, ask. Which page So Pash? superlative is page number one Page numéro. Hmm. is uh, Page numéro. 44. How do you say that? बोलो page numéro पहले. Page numéro. Pass numero. Yeah. 44. Numbers याद करो. Hmm. Okay, page numéro 44. And this in the I have seen that Le Flux and Le Moi is one of the हाँ, way we do the हाँ, superlative and comparative. There are exceptions with the Move, Bon, and हाँ, Bien, but हाँ. apart from the exceptions, the regular way of doing it is Le Flux and Le Moi. But sometimes we put Le Flux before and sometimes Le Flux after and learn more before and learn more after the thing. So how do we decide like it, with adverb and adjective? There's a different. Just I want to clarify that part. So when you put before, it is mostly when you use कर, right? Then it is comparative. Okay, let us do it. जो superlative में हम comparison नहीं करते हैं. So in superlative, we are not doing the comparison. On ne fait pas de comparaison, right? So it's just the Yes. superlative. For example, um, Aishwarya Rai is the most beautiful. जैसे वीडियो में भी बताया. So the most beautiful. In that we are not comparing Aishwarya Rai with any other actress. ठीक है, or any other person. But in comparison, it is we need two, you know, things or two persons to compare. है ना? Moaque. So she is beautiful than ABC, whatever. है ना? But anyway, on peut le faire like d'autres manières. Okay, so I think this we can do. Now you can see here on the screen expression de la comparaison. Comparison. So जब हम comparison करते हैं, as I told you, we need uh, more than one person or thing. मतलब we have to compare between two things. Can you read this phrase? Okay, चलो, I will read. Il est possible de comparer deux éléments ou deux propositions d'une phrase, है ना? So we need two elements, right, to compare deux éléments ou deux propositions. Dans le premier cas, on parle de comparatif et dans le deuxième, de comparaison. What does it mean? In this, we are saying that in the first place, we are talking about the comparative. Comparative मतलब हम क्या compare कर रहे हैं? मतलब are we comparing the quality, quantity, action, है ना यहाँ पे? So anything we can compare, right? The quality or the quantity or any action. Like he writes fast than me. So fast क्या हो गया? Writes fast is the action. ठीक है? So we can compare anything. Now we have certain expressions जो आपने जैसे बोला सिर्फ उसमें भी था. Now if you see here, we have this plus, aussi, moi, plus adjectif ou adverb plus ये वो है आपके फ्लो चार्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर है ना? तो विद एडजेक्टिव और एडवर्ब ये आप लिख लीजिए. यू राइट, गाइस कैन राइट मोर. सो आपको पता है प्लू मतलब मोर देन. प्लू क है ना, ये जो क लगा हुआ है, ऑब्वियसली यू नीड टू यूज प्लू डैश 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 क, है ना? तो शी इज मोर ब्यूटिफुल देन, ऐसे बोलेंगे ना. तो जब हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव, दिस हैज टू बी द स्ट्रक्चर. मोर बोलना है तो प्लस डैश प्लू डैश क मोर.
taller than Isabel. ओसी क होता है as tall as, है ना, बराबर. ओसी मतलब as tall as, अगर हम ओसी ग्रॉ लिखेंगे तो ठीक है. सो ओसी क इज as tall as, tall है या जो भी आपने एडजेक्टिव लगाना है. देन यू हैव मुआ. मुआ मतलब लेस. मुआ ग्रॉक, ठीक है, जैसे भी. सो दिस इज एज, सॉरी, लेस टॉल है ना, लेस, लेस टॉलर मतलब क्या हो गया उसमें, शॉर्ट हो गया है ना, मुआ ग्रॉक. सो दिस इज लेस देन, ठीक है. फ्लूका इज मोर, ग्रॉक इज टॉलर देन, ठीक है, लाइक दिस. So here example is given. So we, this is a structure. Flu oc moi plus the adjective or adverb plus que. ठीक है. So par exemple, hier il était aussi beau que d'habitude. What does it mean aussi beau que d'habitude? D'habitude क्या वो होगा word मैंने करा है. He was as beautiful हाँ यही, as यहाँ पे as यही the वेदर है, वेदर है. ठीक, il habitude était habitude aussi वो है ना. हाँ, d'habitude मतलब, अच्छा हाँ ठीक है. happy सॉरी, désolé, या he was looking, हाँ, as the habitude as beautiful the habitude as means the usual. people who live d'habitude is as as usual. usual, yeah, usual. हाँ, ब्यूटीफुल नहीं होगा तो लड़का है ना, तो स्मार्ट है ना. Smart, yeah. या सो yesterday he was, il était aussi beau que d'habitude मतलब, you know, he was looking as smart as usual, ना, the way he looks. d'habitude is as usual, ठीक है. ये एक एक्सप्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू से हाउस योर प्रेपरेशन गोइंग ऑन, तो आप लोग बोल सकते हैं कॉम d'habitude. कॉम d'habitude इज एज यूजुअल. As usual. हाँ ठीक है, इट इज अ स्पोकन एक्सप्रेशन, कॉम d'habitude. सो yesterday he was looking as smart as usual मतलब, ठीक है. सो ओसी प्लस एडजेक्टिव प्लस क. Similarly, we have Charlotte est moins grande qu'Isabelle, है ना. Charlotte is less taller मतलब, इंग्लिश में तो हम लेस टॉलर नहीं बोलते, बट इन फ्रेंच यू यूज moi डैश क, है ना. सो moi Is it grande is it मतलब छोटी, हाँ. is it not awkward in French like it is very awkward in English to say he's less taller हम्म, than him? एग्जैक्टली. सो उसमें तो हम बोलेंगे शॉर्टर, है ना, इंग्लिश में शॉर्टर, तो ये शॉर्टर ही है इसका मतलब, moi grande इज शॉर्टर, ठीक है. So less tall than, but this is how you use the adjectives with plus aussi moi. तो अब ये क्या है, शार्लॉट इज फेमिनिन राइट, ये गर्ल है. सो आपने एडजेक्टिव भी, you have to do the Accord. accords, yeah. Then okay, this is with the adjective और adverb. आप adverb भी लगा सकते हैं, ये दोनों में adjective है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू यूज adverb, then in that case suppose आपने बोला, हम्म, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया. So let's say you say um Charlotte, no, hmm. So you say Charlotte parle moi vite. Vite adverb. Adverbs आप लोगों को पता है राइट, when you describe any action, जब verb के बाद is an adverb. moi vite que qu'Isabelle, है ना. So whatever. So Charlotte speaks लेस फास्ट मतलब, लेस फास्ट. अब ये इंग्लिश में तो नहीं बोलेंगे, बट इन फ्रेंच इट इज लाइक लेस फास्ट मतलब स्लोअर, मुआ वीट, है ना.
तो वीत मतलब फास्ट, वीत इज फास्ट. So you can put adverb as well. Moi plus adverb plus que. Flew plus adverb plus que. Aussi plus adverb plus que. ठीक है, ça c'est la structure. So this is the superlative. ठीक है. Now the second point we use, sorry, pardon, comparative, not the superlative. The second is flew the, autant de, moi de. जब noun use करना है. Now when we have to use the noun, okay, then we have to use the thing. ठीक है, ऊपर adjective adverb के साथ we don't use the. ठीक है, with the noun we use the. So flew the, autant de, moi de plus noun plus que. Okay, read this phrase, these two and meaning. Julien a plu de travail que Guillaume. Guillaume, Guillaume, Oh, Guillaume. Guillaume, LL silent I double, है ना, Guillaume. Guillaume. Yeah, what does this mean? Julien a plus de travail que Guillaume. Julien works more than Guillaume. Has more work, has. More work. Julien has more work. So work is a noun, right? So with noun you use plus de. Okay. Next one. Okay. Il a autant de courage que Mhm. son ami. Ah, so meaning He have other he have like other the as tall as ऐसे होता है ना as. okay So he has he's as courageous, मतलब courageous. he has, है ना, as much courage as his friend. ऐसा हो गया इसका मतलब equal. ठीक है. So he has as much courage as his friend. Okay. So this we use autant de. ऐसे ही moi de भी लगा सकते हो plus noun. ठीक है. Remember, but Oshi also means as much, and Otto also means so. When to use Oshi and when to use Actually, Otto? with noun, when you use the noun, you don't use ओसी द. ओसी द कुछ नहीं होता. ओसी द नहीं होता, उसके लिए ओतों द होता है. With love. Okay. Yeah, with noun form we don't have ओसी द. It is ओतों द. Similarly with the verb के साथ. Now जो आप कह रहे थे कि बाद में लगता है, अब वो ये है verb plus plus autant moi plus que, है ना. So elles se sont amusées plus que leurs copines. Now इसमें with the verb more than there, तो more than इकट्ठा हो गया, है ना. पहले जब हम करे थे more beautiful than, बीच में कुछ आ रहा था, more work than, तो हमने of course than तो बाद में चला जाएगा, and it will go afterwards. But works more than, when it is together more than, तो obviously verb के बाद ही लगेगा ना, works more than their friends whatever. Elles se sont amusées plus que leurs copines. ठीक है, they enjoyed more than their friends with the verb, है ना. Similarly the next phrase, il devra étudier moins que, इकट्ठा, है ना, moins que son frère. So he has to study less than his brother. ठीक है, moins que, इकट्ठा. So you need to know with verb how we use, with adjective adverbs how we use, with noun how we use this. ठीक है, c'est comme ça il faut pratiquer. Now we have certain exceptions, जैसे हमने प्लू लगा दिया हर, suppose with adjective we have added प्लू, मुआ, है ना, ग्रॉन्थ के साथ हमने प्लू भी लगा दिया, मुआ भी लगा दिया.
But with every adjective or every this thing we cannot, we with every adjective or every adverb we cannot always add plus or moins, है ना? For some we have the superlative form, है ना? So for example, if we have to write he is better than me, है ना? More good नहीं होता कुछ, ठीक है? Good के साथ more good नहीं होता है. In that case we have with the adjective bon is an adjective. So bon का better version जो superlative होगा वो meilleur, ठीक है? So par exemple ces croissants sont meilleurs que ceux d'hier. अब ये sir you might have not done, it will come, but so these croissants are better than, ठीक है? bon के साथ we don't add plus bon का higher version हो जाता है meilleur. Ces croissants sont meilleurs que ceux d'hier, है ना? better than. तो ये आपने लिखने होंगे. These you have to write them in your notebook, and you can write these examples as well. These are this is how we do. For bien is an adverb, okay? Better मतलब well, है ना? उसका superlative higher version हो जाएगा mieux. Elle travaille mieux, है ना? Adverb है, so obviously after the verb होगा. So she works better than her friend, ठीक है? Or girlfriend you can say. So she works better than her girlfriend. But Girlfriend say, वाला girlfriend नहीं होता, relationship वाला. I just think I have told you. Copain copine is male friends, female friends. हाँ. this Hawaii looks very similar to the verb form of Hawaii हाँ तो verb भी तो है. as a verb. Okay, it works more than. She works. Okay, तो adverb है ना, तो bien is an adverb. तो okay, yeah, adverb, right? So verb है ना, she works better. तो yeah, better. या मिया इज बेटर, राइट? मिया का मोर प्लू मिया नहीं होता, तो इसीलिए प्लू नहीं होता, मिया होता है. और बेटर का नेगेटिव क्या होता है, मतलब बेट बेटर का P नेगेटिव मतलब P हाँ पीर, है ना? वर्स्ट. तो तो उस केस में फॉर मोवे यू हैव पीर, या तो इन दैट केस ले रिजल्टा सॉ पीर que les vôtres, ठीक है? मिया का ऑपोजिट हो गया पीर. The results are worst than yours, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेज पति. यहाँ पे जब हम हाइट के बारे में बात करें, टाई इज योर हाइट, है ना? और मेजरमेंट. सो वी कैन यूज प्लू पति अगर मोर बोलना है. तो फॉर एग्जाम्पल सा chambre est plus petite que la mienne. प्लू petite यहाँ पे हो गया ज्यादा छोटा, तो स्मॉलर हो गया, ठीक है? शॉर्टर. प्लू petite que la mienne. La mienne is than mine. But when we are saying petit, like importance या valor, ये moindre, par exemple, ce concert a eu un succès moindre que prévu. ये थोड़ा सा B2 लेवल, मतलब ठीक है B1 ही है, but did you understand the meaning of this phrase? Ce concert a Question. eu un succès moindre, ये एक adjective की तरह भी काम कर रहा है. After the noun we are placing it, right? Un succès moindre. ऐसे नहीं बोलते कि uh, when we give the importance to something, less successful, है ना? So it's that ways. But अभी मुआंद्र पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है, but still for you should know it. Okay, so you guys can take the screenshot to this, but I hope you might have written something in the class as well. So please read this thing and try to understand. This is how we do the comparison. Okay, on va pas le faire. Now we can try doing some exercise.
uh, हाँ ठीक है, we can try doing question numéro 2. In the bracket we have already given you कि आपने किस में करना है, ठीक है. Now la question c'est complète les phrases avec un comparatif. हरजो तो अपना म्यूट कर लिया करो when you तो because lot of disturbance comes वहां से after you speak, है ना. So complète les phrases avec un comparatif comme dans l'exemple. Donc le premier exemple c'est déjà fait, है ना. So in the bracket we have given you the symbol, मतलब हमको you have to tell whether it is more or less. ठीक है. For example, l'ordinateur que je viens d'acheter est plus puissant que celui que j'avais. अब ये बहुत B2 टाइप का सेंटेंस है, मतलब if this type of a sentence you're gonna write in your exam, this is actually NCLC 7, NCLC 8, NCLC 8 लेवल का ये सेंटेंस है, CLB 8, है ना. बट actually अगर if I talk about the exam perspective, these two topics, comparative and superlative, you are not gonna use anywhere. मतलब इसका यूसेज है ही नहीं. It's very very less. This thing we normally do not use in our exam, neither in TEF nor in TCF. ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास um, I mean we don't have such setting where we have to use comparative and superlative. But yes, you should know it because it is a part of your grammar thing. So ये आपने यहाँ पे प्लू डैश क, है ना, ये क्या है, प्लू एडजेक्टिव क. ये भी आइडेंटिफाई करिए कि वेदर इट इज एडजेक्टिव और एडवर्ब. नाउ ट्राई डूइंग दिस वन. सो दिस इज डिफिकल्टी, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ओतों, जो भी है, ओसी का लगेगा, ओतों का लगेगा, क्या लगेगा, दैट यू ट्राई. सो आई एम गिविंग यू 2-3 minutes. Do this exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sentences. Ok, après on va discuter. If yeah. Ok, on va discuter. Deuxième phrase. Second phrase. Certains élèves Hmm. sont aussi que difficiles en physique qu'en histoire, géographie. Okay, so difficulty is adjective. Adjective, yes. Difficulty is an adjective, or difficulty is an adjective. Difficult होता है adjective में. Difficile adjective होता है. Difficile. I have a lot of difficulty. I have difficulty. Verb के बाद है ना. Have. Difficulty is a noun. Difficulty is a noun. Difficult is this thing, adjective. And it's also that. हाँ, difficulty, that जो लिखा है वो noun है. Difficulty, and difficile is difficult. ये है adjective, difficile. Okay, in French. So it That says élève on, autant, है ना, autant. क्या था ऊपर, भी did right with the noun forms. How we do? Autant the dash plus que, noun plus que, right? So autant de difficulté en physique qu'en histoire. Physique यहाँ पे physics, okay, ये basically subject है. So it will be autant de difficulté, okay.
ये आपने ध्यान रखना है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव। तो क्यू यू कैसे लिखेंगे? क्यू यू अपोस्ट्रोफ। ओके, troisième। Dans le centre-ville, il y a beaucoup moins हम्म, circulation le matin que le soir. हाँ तो ये थोड़ा सा वैसा मतलब लिया बुक। नाउ सर्कुलेशन इज नाउन एडजेक्टिव, या नाउन है कि एडजेक्टिव है? Check. ट्रैफिक। Uh, it's adjective. नहीं नहीं, ट्रैफिक एडजेक्टिव थोड़ी है, ट्रैफिक किसी को डिस्क्राइब थोड़ी कर रहे हैं मतलब। ट्रैफिक ये भी नाउन है। TION ending words generally they are noun, right? Education, pollution, the pollution, la ले लगा हो ना। So beaucoup moins, इसमें ना beaucoup moins de, beaucoup moins de circulation le matin que le soir। थोड़ा सा ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इट इज अ नाउन, ठीक है। द फोर्थ वन, ils aiment dash। हाँ यहाँ पे क्या हुआ? Autant. ils aiment dash les Les films। films. हाँ सो Autant. वर्ब Autant. एडवर्ब। Adverb. सो ये क्या हुआ? दे लव डैश द फिल्म पोलिसिए दैन द फिल्म। सो दे लव डैश मतलब पोलिसिए, है ना, फिल्म दैन द एडवेंचरस फिल्म। तो एम है ना, एम। तो क्या होगा? इज एम ओतों द प्लस ले, थोड़ी ओतों द नहीं होगा ना, ओ सी। क्या है इसमें? अच्छा यहाँ पे क्या है ये? इक्वल टू, राइट? सो व्हाट यू गोना राइट? For equal, as much as. So is it? It's autant de, and it is also this thing with verb. Verb के बाद क्या लगता है? Autant que, moins que, Autant. है ना? और with the adjective adverb we have plus dash que। तो ले फिल्म policier is adjective या adverb? पहले तो ये बताना है। I thought it's verb. हाँ बट ले फिल्म policier। This is हम्म the film is a noun and cliché is a kind of a subjective because it's हम्म। describing the quality of the film, like aspect of the film, probably. Anybody else? Have you tried? Oui, madame. So please speak in the class. So what have you written for the fourth sentence? Which हुआ actually? Yeah, I wrote Hmm. the first, then I corrected it after you said it Hmm. is auton, then que. Ils aimaient autant le film Hmm. policier que le film Yeah. d'aventure. So here it is. It will be autant de, because les films policiers is also the noun. Autant de. Autant de film. Basically फिर ये ले हट जाएगा actually। ओ ओसी नहीं आएगा इसमें, ओसी नहीं है ना, नॉट ओसी। ओसी फिर यहाँ पे वर्ब फॉर ओसी इट शुड हैव बीन अ नाउन और एन एड सॉरी एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। बट फिल्म्स मूवीज दे आर नाउन, दैट इज अ नाउन, राइट? फिल्म, लो फिल्म, ये नाउन है। सो ओतो द, सो ले हट जाएगा, ओके। ओतो द फिल्म पोलिसिए que les films d'aventure। ट्राई टू आइडेंटिफाई जो वर्ब
ब्लैंक के बाद क्या है नाउ, ये भी क्या है, nous avons dash de temps, ये भी नाउन है एक्चुअली। मोस्टली यहाँ पे सारे नाउन ही हैं, नहीं नेक्स्ट वाले में ये होता है एडजेक्टिव, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। हाँ वेरी गुड। nous sommes au lycée, nous avons, ये बताओ ये नाउन है। ये द, मोदे moi de, मोद de, मोदा moi de temps pour मोदा sortir, sortir kawan qu'avant, qu'avant, kawan avant. So qu'avant. Okay, Q apostrophe. Very good. CCM. Now this is an adjective. यहाँ पे adjective लगेगा means वो it जो, will be aussi ce film est aussi हाँ que हाँ, aussi intéressant. intéressant intéressant que celui que nous avons vu hier Very good. Que nous avons, liaison. Que nous que, avons. que nous avons vu hier View, view hier. vu hier. Right, bravo, oui. Okay, septième. Now bien is an adverb, right? Bien, très Yes. bien, ये adverb होता है. So with adverb again the same rule. Yeah, same aussi and que Yeah. malgré son jeune âge, Sans jeune âge, jeune. हाँ. jeune âge, हाँ. demain, demain, Damien, Damien. Damien, sorry, uh, Damien joue हाँ. au, what is this? I mean, Échec, aux échecs. aux échecs means chess. Okay, Yes, yes. aux échecs aussi bien que son père. Right. Bien, Person. Yeah. Oui. Aussi bien. As good as his father. है ना? Malgré. okay. Malgré is in this thing. In spite. Okay. Okay. Yeah. Okay. In Okay. spite of his young age, Damien plays better. Plays chess better. Done. Sorry. As good as his father. Okay. VTM. Now Uh, tourist. This is what? here, Adjective, adverb, or what? Or noun? The tourist, right? Tourist. yeah. So यूं जब लगा है तो of course it is a noun, right? If it is a Done. gender हाँ base तो Yes. देखिए adverbs और adjective, of course adjective का भी gender होता है, but we don't use yun or la la before that. तो आपने ये देखना है Yeah. la tourist, है ना? So it is a noun. Okay, we answer. Yes. Okay. juillet il y a noun के साथ क्या है? Flew the Right. Plus de touristes sur la côte d'Azur qu'au, है ना? go with apostrophe. Qu'au Four. Pays Basque. Four pay bus. Yeah. Okay. Now this topic again, I'm saying it. You should know it, how to use it. But for the exam point of view, we are not using it in our writing, neither in our speaking. Okay. But ठीक है, since it's a part of your grammar thing, il faut le savoir. Okay. Now, if you want, you can practice more exercises. You have the book with you, the B1 book which I have given you. Also, that grammar practice, all in one. From there also, if you have this topic, practice from there. Okay, if you really want to devote more time on this. Okay. For more, you can try this exercise. Take the screenshot of this if you want. Question numéro 3 and 4. 3, 4. Vous avez une voiture? अच्छा Um, 4 uh, या 3, you, just the third. हाँ. last class you also told that you're gonna explain how to write accents on a computer. What, how to? Oh Write yes, yes. accents on. Yeah, yeah. Okay, I will explain.
ठीक है, take the screenshot of this question मैं खुद हुआ that you this one you can try and question numéro that's it the third. Okay, superlative again I want you all to read once ये आप ले सकते हैं एक बार screenshot if you still want to study the this thing. एक second एक screen को इसको कर देते हैं. You can read this thing. If you have any problem or questions, you can ask me. ये ले लो पूरा screen इसका. With examples, try to read. ठीक है? Yes. So now I'm gonna tell you how we use that accents. ठीक है? Uh, Now what you all have to do is when you're typing. Now please start typing whatever. So please give me the do some writings or whatever. I can do some questions. I can share some writing topics with you. Now what you will do when you go this thing you type French keyboard. ठीक है? You have this. You can take the screenshot. This is french.typeit.org. ठीक है? french.typeit.org. ये आपका खुल जाएगा. ठीक है? This is actually real time practice for your exam perspective. So क्या होगा? Mostly it is computer based, right? TCF test. We will not be able to use any shortcuts in the exam. ठीक है? No shortcuts. Keyboard जो होगा वो traditional keyboard जो होता है वैसा होता है. कोई shortcut नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा. ठीक है? Now in your exam TCF TCF Canada जो screen होती है, so you see there is this virtual keyboard right above here. In your exam you will have this virtual keyboard here. ठीक है? ऐसे होगा box में. So it's like more same. Now what you're gonna do is you're gonna type here. So what you do? So for example, if you're doing some writing practice, so let's say I want to write c'était un garçon, है ना, qui achète whatever. चलो bon accent वाले words याद ही नहीं आ रहे. But anyway, now see there are two ways. So when I prepare students for TCF exam, because time management is the most important thing. ठीक है? So अभी जिसे मैंने type किया, I have just typed it without accents. So there are two ways. One, you first type what you want to write. ठीक है? Because क्या होता है? When the ideas, so when you get a question and when you write, continue writing. So you have a sentence or an idea in your mind. So it's better you first write your ideas, है ना? Keep typing like this. है ना? So once you complete your task number one, the task. So it is always better to once you complete the task, then so all of you please start using mouse. जो भी ये लैपटॉप पे जो क्या बोलते हैं टच पैड होता है उससे करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी. आई एम सेइंग बिकॉज वन और टू ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड मी, तब से मैं ये बताने लग गई हूँ पिछले मेरे ख्याल से 8-9 महीने से. आई टेल ईच ऑफ माई वन एवरी स्टूडेंट. Now my students in one-on-one coaching they practice here only. Only then they are able to develop the speed and only then they are getting NCLC 8 also in speaking. Now I think many of my students they are getting 13 on 20 in the writing thing. ठीक है? अभी रिसेंटली मेरे 5-6 रिजल्ट्स आए हैं, वो सबके 13 ही आए हैं. अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं राइटिंग में. सो 1 आवर मैनेज करना इज इम्पोर्टेंट. सो एक्सेंट्स अगर आप साथ साथ if you will put the accents alongside, then you will lose a lot of time. Okay, you won't be able to complete all the tasks in 1 hour. So the idea is to first write, because you have those ideas in mind. And once the task is finished, now I am writing. I have held the mouse in my right hand. अभी मेरे right hand में mouse है.
ठीक है. So I have put the cursor here. मैं अपने माउस से cursor रखूंगी and with my my left finger, left hand finger is on the backspace button. ठीक है, keyboard पे. So now I start revising also. Revise भी हो जाएगा और मैं accent भी लगा. I will revise also and I will put the accents also. Now I will know, I will read. Say okay, हाँ ये E है तो मैंने backspace दबा, sorry apostrophe नहीं मिटाना. So I have to erase this E. फिर मैंने अपने माउस से कर्सर यहाँ पे रखा और I have used this. C'était un garçon, ok garçon पे तो accent आता है. I backspace C. Qui achète, okay, this is the conjugation. Backspace like this. ऐसे ऐसे करोगे, this is the best strategy. But if you will type and then take a pause and फिर you will hold the mouse, then you put the accent, then you write the word, it will be a long process. ठीक है, now start using this. And then after once your task is completed, copy and paste on your Word document और जैसा भी है. ठीक है, so this is the tool. Okay, any questions? I'm not regarding this, but like, can you also send us the audios for the listening of the book? This to to communicate this book. Which one? Or root flow? V1. Yes, ma'am. Yes, this B1 book अच्छा, listening. इसकी तो आई थिंक सिर्फ यही है ना listening के, just the comprehensions. Do we have extra listening here? And like some of the listening, they speak it. Some of these comprehensions, they speak it like as the Okay, listening. okay, I will share it. I might have forgotten. I will And share. this one was very difficult. When you are currently scrolling, it was like an old अच्छा, lady speaking in a very rude language, rude अच्छा हाँ talk. ये play button है, right? Okay. Oh maybe yeah. Where is it? Listening के किधर है यहाँ पे? In the exercises. Okay, here you have the phrases and all. Okay, I will share the audio. Okay, Okay. okay, so we meet next class. Please, I'll share the next set of videos today. Okay. Au revoir, then we meet on my Friday. Okay, au revoir.